Next, the graph shows a sketch of the first ionization energies of six successive elements in the periodic table. The letters are not the symbols of the elements. ठीक है. ग्राफ दिया हुआ है आपके सामने. Explain what is meant by the term first ionization energy. तो फर्स्ट ionization energy की definition क्या होती है? It is the energy required to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms to form 1 mole of positively charged gaseous ions under standard conditions. ये है definition of the first ionization energy. Next, suggest why the first ionization energy of B is much less than that of A. इसके लिए हम लोग टेबल को वापस रेफर करते हैं, टेबल को या ग्राफ को जो है उन्होंने नॉट टेबल ग्राफ एक्चुअली उसको वापस रेफर करते हैं और ग्राफ को रेफर करके देखते हैं कि कितना फर्क है, फिर उसके बारे में लिखते हैं. ये रहा आपका ग्राफ फॉर द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. अब इसमें नोट करो कि ए की एनर्जी बहुत ज्यादा है, बी की एनर्जी उससे कम है, सी की ज्यादा है, डी की कम है, ई की ज्यादा है, एफ की ज्यादा है. अगर आपको ट्रेंड इन आयनाइजेशन एनर्जीज याद हो तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है P6 कॉन्फ़िगरेशन की, राइट. तो ए जो है वो P6 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी वो अंदर वाले शेल का है एलिमेंट, या यूं कहना चाहिए ये जो है आपका नोबल गैस है P6. तो ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, ये P1, P2, P3. ये जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से आयनाइजेशन एनर्जी जो है इसमें आपके अकॉर्डिंगली वेरी कर रही हैं और इनका जो इंक्रीज और डिक्रीज है वो भी रेलेवेंट है. तो ये जो हमने आइडेंटिफाई किया कि एलिमेंट ए जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P6 की है, दैट मींस इट इज अ नोबल गैस. ये बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया. तो बेसिकली ए और बी में जो फर्क है वो इस वजह से है कि बी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल में, मतलब शेल बढ़ गया एक, ठीक है, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है, तो कम एनर्जी चाहिए होगी इसको रिमूव करने. तो ये आपका एक और 3 मार्क का है, तो इसमें फिर आप शील्डिंग इफेक्ट का भी जिक्र करोगे, ठीक है. तो अब हम लोग इसका आंसर लिखते हैं. ओके, suggest why the first ionization energy B is much less than that of A. In element B, there is one additional shell in comparison to element A. Therefore, the outermost electron is further away from the nuclear attraction and experiences greater shielding effect because of which the requirement of ionization energy decreases. ठीक है, आपने ये बता दिया कि बी एक डिफरेंट पीरियड में जब भी उसका एक एडिशनल शेल है, आपने ये बता दिया कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम एक्सपीरियंस हो रहा है, आपने ये बता दिया कि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है. Next, P to T are successive elements in period 3 of the periodic table. The letters are not symbols of the elements.
On the axis, sketch a graph to show the trend in the atomic radius of elements P to T. Explain your answer. अच्छा, अब हम लोग अगर along a period की बात करें तो atomic radius decreases along a period, तो हमने इसको decreasing trend में हमने एक लाइन बना के शो किया है. ठीक है, decrease in the atomic radius. Explain your answer. अब इसकी explanation क्या होगी? Along a period, as the number of protons increases, the nuclear charge increases. The electrons are held more firmly. Electrons are held more firmly and are pulled closer to the nucleus. This results in a decrease in the atomic radius. ठीक है, along a period as the number of protons increases, the nuclear charge increases. The electrons are held more firmly and are pulled closer to the nucleus. This results in a decrease in the atomic radius. एक और साथ में ऐड कर लो, electrons are added to the same shell in a period. Therefore, there is no significant increase in the shielding effect. ठीक है, ये आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गई. आपने न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की बात की, आपने सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट क्यों नहीं होता उसका आपने जिक्र कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम शेल. तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होती है फॉर द डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स अलोंग अ पीरियड. Next, the elements in the third period show a general increase in their first ionization energies from left to right. Identify two pairs of successive elements in the third period that do not agree with this statement. For each pair, explain why changes in ionization energy do not agree with this statement. Use of the data booklet may help you to answer this question. Okay. सबसे पहले इन्होंने थर्ड पीरियड की बात की है, तो स्केच फॉर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द थर्ड पीरियड जो है वो इस तरीके से होता है. ये रहा. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स. ठीक है, और थर्ड पीरियड है तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन. तो ये हमारा साइनस एनर्जी का ग्राफ हो गया. अब वापस पढ़ते हैं कि इन्होंने किस चीज से बोला कि अग्री नहीं करते हैं. The elements in the third period show a general increase in the first energy energies from left to right. ठीक है. Identify two pairs of successive elements in the third period do not agree with this. Okay. तो जो टू सक्सेसिव पेयर्स हैं वो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है, क्योंकि एल्यूमिनियम की एनर्जी कम हो रही है, और फॉस्फोरस और सल्फर है क्योंकि फॉस्फोरस के बाद सल्फर की एनर्जी कम हो रही है. तो ये आपके दो पेयर्स हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत है. चलो अब इसको लिखते हैं. तो पेयर वन क्या होगा? पेयर वन इज मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम. ठीक है. एक्सप्लेनेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mg is 3s2, या यूं लिखते हैं कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Mg is 3s2 which is a completely filled
configuration, thus it is stable. For aluminum, the outer configuration is 3p1, which is partially filled, hence it is easier to remove this electron. अच्छा, यहाँ जगह अभी स्क्रीन पे खत्म हो गई है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, कलर चेंज करो ताकि आपको पता है कि यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है? ओके. For aluminum, the outer electronic configuration is 3p1, which is partially filled. Hence, it is easier to remove this electron as it is present further away from the nucleus as compared to the 3s electrons. ठीक है ना, क्योंकि 3p का जो ऑर्बिटल है वो 3s से ज्यादा दूर है न्यूक्लियस से, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो रिलेटिवली कम होगी. इस वजह से इट इज इजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 3p ऑर्बिटल इन कंपैरिजन टू द 3s ऑर्बिटल, जो कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का फर्क है. मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल भी है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उसको डिस्टर्ब करने में एनर्जी भी ज्यादा चाहिए. तो ये आपका डिफरेंस हो गया बिटवीन मैग्नीशियम and aluminum, and aluminum is breaking the trend, ठीक है, because it has a lower requirement of ionization energy as compared to magnesium and silicon, जो कि इसके दोनों तरफ adjacent elements हैं. अब नेक्स्ट पेयर जो है, नेक्स्ट पेयर इज फॉस्फोरस एंड सल्फर. तो फॉस्फोरस एंड सल्फर की बात करते हैं. पेयर है फॉस्फोरस एंड सल्फर. ओके, so phosphorus has a 3p3 configuration which is a stable half filled configuration, while sulfur has a 3p4 configuration in which a pair of electrons experience inter-electronic repulsion because of which it is easier to remove an electron as the repulsion decreases the requirement of ionization energy. ठीक है. अच्छा, ये याद रखना, सल्फर के बाद क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद आर्गन है, उनकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ जाती है, ऑल्दो उसके अंदर जो रिपल्शन है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन ये भी याद रखना कि साथ ही साथ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड मोर फर्मली, सो ओवरऑल जो नेट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें इंक्रीज ही नजर आएगा.